हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथमेजेस्टिक। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के सम इम्पॉर्टेंट एंड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो बार बार किसी हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे पहले अगर आपने इसका बेसिक्स नहीं किया है चैप्टर 2 का, आई विल सजेस्ट कि आप पहले मेरी ओल्ड वीडियोस देखिए जिसमें हमने चैप्टर 2 के पॉलिनोमियल्स को डिटेल में डिस्कस किया है। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो यू कैन वॉच फ्रॉम देयर ऑल्सो। आज हम करेंगे कुछ FAQs इस चैप्टर के जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k 3 is a zero of the polynomial 2x square plus x plus k. We know that zero of the polynomial is the value of the variable which satisfy the equation. That means अगर हम x की वैल्यू 3 इसमें पुट करें तो it should be equal to 0. So let's take this polynomial will be equal to 0 if x is equal to 3. अगर 3 इसकी 0 है तो अगर हम 3 इसमें पुट करेंगे तो this should be equal to 0. So we can find the value of k from here. If you substitute x 3 square will be 9. X is 3, so that is equal to 0. 18 plus 3 plus k equals to 0. That means value of k will be minus 21. So the answer of this question is minus 21. Now we will move to the question number 2. See the question 2. If the product of the zeros of the polynomial ax square minus 6x minus 6 is 4, find the value of a. We are given the product of the zeros of the polynomial this. This is the polynomial and product of the zeros is 4. We have to find the value of a. You can see that here a is given as the coefficient of x square. First we will compare this equation polynomial with the general polynomial. This is the given polynomial and the general quadratic polynomial is ax square plus bx plus c. So if you compare, you can see that a तो a ही है यहाँ पर. Value of b is minus 6 by comparison. And value of c is also minus 6. Sign also we will take along with the number. Now we know product of zeros is by relation between coefficients and zeros. Product of zeros is c by a. c is minus 6 and a is a here only. a की value तो आपको given ही नहीं है. So minus 6 by a. And in the question product of the zeros is given to be 4. So let's put it equal to 4. So from there you can find the value of a easily. A will be minus 6 by 4. That means minus 3 by 2. That is your answer. You have to find the value of a only. So these are very small questions. These are asked in 2 or 3 marks, which are very easy questions. Similarly, sometimes you might be given the sum of the zeros also. So for the sum of the zeros, you will use minus b by a and that you will put equal to the given number and you can find the asked variable. Now question number 3. If one zero of the polynomial this is the polynomial. If one zero of this polynomial is reciprocal of the other, find the value of a. Now 1 0. अब 0 क्या है ये नहीं given है. So if any number is the 0, suppose 4 is the 0, so 1 0. Now it is first of all it is a quadratic polynomial. तो इसकी 2 ही 0 हो सकती हैं. अगर आपकी एक 0 आप यहाँ से 4 लेते हैं, सपोज कोई भी हो सकती है, तो रेसिप्रोकल विल बी 1 by 4 ऑब्वियसली. सो लेट्स टेक इट्स एनी 0. सो 4 और 1 by 4 अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो वी विल गेट 1. इट इज ऑलवेज ट्रू इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर by its reciprocal. Reciprocal of the number means 1 by that number. If you multiply a number by its reciprocal of number, you will always get 1. Suppose 4 is the number, reciprocal of 4 is 1 by 4. If you will multiply them, you will get always 1. That means ultimately we are given that both the zero प्रोडक्ट ऑफ देम इज 1 बिकॉज दोनों जीरो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. दैट मीन्स उनका प्रोडक्ट 1 है. तो एक तरह से हमें क्या दिया हुआ है, दैट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 1 हेयर. इसका मतलब हमें हिडन वे में ये दिया हुआ है दैट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 1 एंड द फॉर्मूला फॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज c by a. एंड इफ यू कंपेयर, c इज द कांस्टेंट टर्म इज 6a हेयर and a is coefficient of x square.
instead of a we are given a square plus 9. So we are given this 1 is equal to 6a by a square plus 9, and we have to simplify this and find the value of a here. So how we can simplify this? We got the equation here. Now what is the equation? You can see that equation is 1 is equal to this. So 6a is equal to a square plus 9 equals to 1, and we will simplify this. Cross multiply करें तो 6a will be is equal to a square plus 9. So now we will make it a quadratic polynomial equation. A square 6a we will shift on other side plus 9, that is equal to 0. Now we will use the splitting of the middle term here, or we can use the second identity also. So we will use the splitting of the middle term, suppose, or second identity we will use. So this is the perfect square of a minus 3, a square, a minus b whole square, that is equal to a square minus 2ab plus b square. So here you will get a square minus 2ab, that means 6a, and 3 square means 9 here. So a minus 3 whole square is equal to 0. So value, that means we will get two factors, a minus 3 and a minus 3. So one by one if we will put them equal, so value of a will be 3 only. That is our required answer. That value of a we have to find out. So again I am repeating this. What is given here? That both the zeros are reciprocal of each other. और अगर दोनों जीरो एक दूसरे का reciprocal है तो it is very clear that their product will be 1 always. That means हमें product of the zeros is given 1. We have to form the quadratic polynomial. We have to find the value of a. So product of zeros is c by a. By the formula, c means constant term, a means coefficient of x square. That means 6a by a square plus 9 is equal to 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, वी विल गेट 6a इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 9. सिंप्लीफाई करेंगे इसको, लीनियर पॉलिनोमियल आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई. वी विल सिंप्लीफाई दिस बाय यूजिंग द आइडेंटिटी. फैक्टराइज करेंगे तो वैल्यू ऑफ a इज 3 हेयर फ्रॉम बोथ द फैक्टर्स. दैट इज आवर आंसर. Now we will move to the next question, that is question number 4 of today. Let's see question number 4. Now before discussing question number 4, we will discuss some of the identities which we have done in the previous class. First identity is alpha square plus beta square is equal to alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. Now it is the question how we got this. Okay, let's simplify this. हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर. वी हैव डन दिस आइडेंटिटी. सो अगर हम इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वी विल टेक दिस 2 अल्फा बीटा ऑन द अदर साइड. सो दैट्स व्हाट वी हैव डन. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू, इट विल बी शिफ्टेड, ऑलरेडी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर था, 2 अल्फा बीटा उधर शिफ्ट करेंगे तो इट विल बी माइनस 2 अल्फा बीटा. That is this identity only. So when you have to find out this, you can use this also. Now how we will apply this, when we will use it, I will tell after the identities. Now similarly, second is alpha minus beta whole square is equal to alpha plus beta whole square minus 4 alpha beta. How you can do this now again? Now see, left side we will solve first. Alpha minus beta whole square. होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर. नाउ वी वांट टू मेक इट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर. सो दिस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कैन बी रिटन एज 4 अल्फा बीटा. वी हैव टू मेक दिस, वी कैन राइट दिस एज 2 alpha beta minus 4 alpha beta, because there minus 4 plus 2 will be minus 2 again. So हमने इसको split break कर दिया है, ठीक है, plus beta square as it is. So now if we will take this term and this term together, alpha square plus 2 alpha beta plus beta square minus 4 alpha beta, तो ये हमारे पास क्या बन गया? alpha plus beta का whole square minus 4 alpha beta. So that means this identity is proved. So हमने क्या किया है, सिर्फ इसी को इन टर्म्स ऑफ दिस वी हैव रिटन, बिकॉज इट इज द सम ऑफ द रूट्स. अगर अल्फा बीटा रूट्स हैं, सम ऑफ द रूट्स, और ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. और अगर हमें सम और प्रोडक्ट दिए हुए हों तो वी कैन फाइंड आउट दिस. ओके. सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन इज
identity is alpha cube plus beta cube is this. ये तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला भी किया था इन 9th क्लास, सो यू कैन डू बाय दैट ओनली. अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमने आइडेंटिटी की थी अल्फा प्लस बीटा क्यूब, that was alpha cube plus beta cube plus 3 alpha beta into alpha plus beta, and by this only we have shifted this term on the left side, we will get this identity. Now fourth identity is alpha 4 plus beta 4 is equal to this. So how we can find out this now? So let's simplify it. For this what we will do, let's take this alpha square plus beta square whole square. Let's simplify this. अगर हम इसको एज ए और इसको बी लें तो होल स्क्वायर है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ऑलरेडी ए और बी हमारे, ए मीन्स अल्फा स्क्वायर, बी मीन्स बीटा स्क्वायर. सो नाउ इट विल बिकम 2 to the 4 power. This is alpha square beta square, this is beta raised to power 4. We can write this alpha 4 to alpha beta whole square we can write plus beta 4. अब हमें क्या करना है, we have to find out alpha 4 plus beta 4. So this we will shift on the left side and we will get the same identity alpha 4 plus beta 4. ये अगर हम उस साइड शिफ्ट कर दें तो ऑलरेडी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर था, ये उधर जाके 2 अल्फा बीटा स्क्वायर बन जाएगा. ऑल राइट, आई होप ऑल द आइडेंटिटीज आर क्लियर टू यू. देयर मे बी सम मोर बट वो भी ऐसे ही डिराइव करके ही आती हैं, सो यू कैन फाइंड आउट देम. नो नीड टू लर्न दीज आइडेंटिटीज. You can simplify whatever is given to you. Suppose now we will do by this example how we can apply or use these identities in the numericals. Let's do one example. Suppose if alpha and beta are the zeros of this quadratic polynomial, we have to find the value of this. Okay, so now alpha beta are zeros and we know that sum of the zeros is minus b by a. If first we will compare it, this given polynomial with the general polynomial. So you will get value of a is 6, value of b is 1 because no coefficient is given, and value of c is minus 2. Always take this in mind that sign जो है वो हमेशा आपको coefficient के साथ ही लेना है, नंबर के साथ ही. So now put the values. Sum of the roots is minus b by a. Minus b means b is 1 here. So minus 1 by a is 6. So minus 1 by 6. And similarly product of roots, that is always c by a. C by a. That means c, value of c is minus 2 and value of a is 6. That is minus 1 by 3. So what you will get, alpha plus beta is minus 1 by 6. Alpha beta is minus 1 by 3. We have to find now the value of alpha by beta plus beta by alpha. So what we can do, nothing is given, so we can take the LCM here. Alpha beta will be the LCM here. So here if beta is the if we divide it by beta we will get alpha, so it will become alpha square and this is beta square. अब ऊपर alpha square plus beta square आ गया and we have done the first identity here, alpha square plus beta square. Alpha square plus beta square is equal to alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. We will use this identity here, that alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. And why we are doing this? Because हमारे पास alpha plus beta की भी value है और alpha beta की भी है. We can put both the values here. Alpha plus beta minus 1 by 6 square and alpha beta is minus 1 by 3. दोनों वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे. अल्फा बीटा इज माइनस 1 बाय 3 एंड वी विल सिंप्लीफाई दिस. सिंप्लीफाई करने के लिए क्या आ जाएगा, ये 1 बाय 36 माइनस माइनस विल बिकम प्लस 2 बाय 3 डिवाइडेड बाय दिस इज माइनस 1 बाय 3. नाउ वी विल टेक द एलसीएम हेयर. 36 विल बी द एलसीएम, सो यू विल गेट हेयर 1 प्लस 24 डिवाइडेड बाय माइनस 1 बाय 3. सो 25 बाय 36 मल्टीप्लाई बाय रिवर्स हो जाएगा तो माइनस 3 बाय 1. सो वी विल गेट माइनस 25 बाय 12. दैट इज आवर आंसर हेयर इन दिस क्वेश्चन. डिड यू गेट दिस पॉइंट?
अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा वी हैव टू फाइंड आउट। हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बन गया है यहाँ से। तो अल्फा प्लस बीटा का दिस इज द आइडेंटिटी। सो इसको हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फा प्लस इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो +2 अल्फा बीटा आएगा जो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू बच जाएगी आपके पास। क्योंकि हमारे पास इन दोनों की वैल्यू है, हमने सब्स्टिट्यूट कर दी और इसको सिंप्लीफाई किया। सो वी गेट द आंसर -25/12। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड सिमिलरली आपको जैसे अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा की वैल्यू निकालनी है, ऐसे ही आपसे कोई भी क्वेश्चन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू पूछी जा सकती है। तो वी विल यूज दिस आइडेंटिटी हेयर। अल्फा 4 प्लस बीटा 4 की वैल्यू भी पूछी जा सकती है, तो यू कैन यूज दिस हेयर, बिकॉज इन सब में आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यूज होता है। सो कोई भी वैल्यू यहाँ पर आपसे पूछी जा सकती है एंड यू कैन फाइंड इन द सिमिलर वे। सो यू हैव टू डू लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस फॉर दिस, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी मिस्टेक ना हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 वी विल डू। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। आपके पास ये एक पॉलिनोमियल है। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ एफ ऑफ एक्स, दिस पॉलिनोमियल, वी हैव टू प्रूव दिस। अब अल्फा बीटा बिकॉज इसके जीरोज हैं, फर्स्ट वी विल कंपेयर एफ ऑफ एक्स बाय द जनरल पॉलिनोमियल एंड फाइंड द सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जनरल पॉलिनोमियल इज ax square plus bx plus c. So if you will compare, you will find value of a is here 1, b is, अब देखिए इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या हो जाएगा, ये यहाँ से p से मल्टीप्लाई करेंगे, px माइनस p माइनस c। सो दिस इज द कांस्टेंट हेयर। तो कांस्टेंट के लिए हम क्या करेंगे, -px, x का कोफिशिएंट तो -p हो गया और ये दोनों टर्म कांस्टेंट्स हैं, तो माइनस वी विल टेक कॉमन, दिस इज योर कांस्टेंट टर्म नाउ। अब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो वैल्यू ऑफ a 1, वैल्यू ऑफ b इज -p and value of c, constant term, is minus of p plus c. Okay, so now a, b, c we got. So that means we can find sum of roots. Formula for sum of roots, alpha plus beta is minus b by a. Minus b, that means minus of minus p will become positive, a is 1. So p we will get. And product of roots, if we find out product, that is alpha beta. So product of roots formula is c by a. C is this, a is 1, that means minus of p plus c, you get this. Sum and product of roots we got. अब हमें निकालना है ये। So left side we will take alpha plus 1, beta plus 1. Okay, so we will first multiply this. सो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपके पास अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अब देखो यहाँ से हमें डायरेक्ट दिख रहा है अल्फा बीटा हमारे पास आ चुका है, अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू हमारे पास है, तो वी विल पुट द वैल्यूज ओनली हियर। अल्फा बीटा इज माइनस p प्लस c, अल्फा प्लस बीटा इज p एंड प्लस 1। हमने सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हैं। इसको खोलेंगे तो -p माइनस c प्लस p प्लस 1, p इज कैंसल्ड, सो -c प्लस 1, दैट मीन्स 1 माइनस c, एंड दैट वी वांटेड टू प्रूव, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस c। इज इट क्लियर? देखिए आई जस्ट लेट्स रिवाइज दिस इज द पॉलिनोमियल। पहले इस पॉलिनोमियल को सिंप्लीफाई किया, px, p कांस्टेंट है, हमने मल्टीप्लाई किया, दिस नाउ कंप्लीट इज द कांस्टेंट टर्म, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x। सो कंपेयर किया जनरल पॉलिनोमियल से, तो वैल्यू ऑफ a विल बी 1, वैल्यू ऑफ b विल बी -p एंड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट विल बी माइनस ऑफ p माइनस ऑफ c। सम ऑफ रूट्स निकालें तो दैट इज -b बाय a, माइनस ऑफ -p will be plus p, a is 1, so p will be the sum of roots and multiplication of roots is c by a. C is this, a is 1, so minus of p plus c. Now we have to find out the value of this. So we will multiply it, alpha beta plus alpha plus 1. Now alpha beta की वैल्यू भी हमारे पास है, alpha plus beta की वैल्यू भी हमारे पास है, plus 1 as it is. Simplify this and you will get it equal to the right hand side. Now we will move to the next question, that is question number 6.
If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial such that alpha plus beta is 24 and alpha minus beta is 8. Find a quadratic polynomial having alpha and beta as its zeros. It is very important question. अगर अल्फा और बीटा ज़ीरो हैं इस किसी पॉलिनोमियल की सच दैट उनका सम और डिफरेंस हमें दिया हुआ है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है जिसके अल्फा और बीटा रूट्स हैं. अब आपको सम ऑफ रूट्स तो दिया है बट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नहीं दिया. अगर हमें कोई पॉलिनोमियल बनानी है तो हमें सम भी पता होना चाहिए और प्रोडक्ट भी, बिकॉज वी हैव द फॉर्मूला फॉर दैट कि पॉलिनोमियल हम कैसे बना सकते हैं, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़. ये हमारे पास कोई भी क्वाड्रेट पॉलिनोमियल बनाने का एक फॉर्मूला है. तो इसके लिए हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ तो गिवन है बट प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज़ नॉट गिवन. पहले हमें उसको फाइंड आउट करना होगा बाय यूजिंग सम सुटेबल आइडेंटिटी. Sum of zeros is this and product of zeros, difference of zeros is 8. Let's do the square on both sides of this. So you will get alpha square plus beta square minus 2 alpha beta and 8 square is 64. So alpha square plus beta square. Now you can write this, we will use the identity which I mentioned earlier. We can write this as minus 2 alpha beta can be written as plus 2 alpha beta minus 4 alpha beta. We can write this as like this because minus 4 plus 2 is also minus 2. Now this complete will become the alpha plus beta whole square and it is as it is. And we have the value of alpha plus beta, that is 24. So we will substitute here. In most of the questions we will be doing like this कि कोई भी जो भी दिया उसका हम स्क्वायर करके देखेंगे, प्लस माइनस करके देखेंगे तो रिक्वायर्ड रिजल्ट अपने आप आ जाएगा. होल स्क्वायर किया हमने, बस इसको रीअरेंज किया है. ठीक है. नाउ 24 स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 64 माइनस 24 स्क्वायर, that is 576. So 24 square is 576. So minus 4 alpha beta is equal to minus 512. Minus minus cancel. So alpha beta will be equal to 512 by 4. So you will get here 128. So alpha beta हमें मिल गया. That means product of zeros is also given. That is 128. So we will formulate now the polynomial. Sum of zeros is 24. Product of zeros is 128. So polynomial will be f of x is equal to k x square minus sum of zeros is 24 into x plus product of zeros is 128. So this is our required polynomial whose roots are alpha and beta. That is your answer. So if my video is helpful for you, so please like, subscribe and share my channel. And if you have any query regarding the chapter, if you have a problem in any question and you want me to put a video of that also, so please send your queries in the comment box. I will solve them and make a separate video on them. Thank you very much for watching my channel. Have a good nice day.